तो मित्रों आप थोड़ी भूल थी गई जे आप 30 डेज चैलेंज लीधो तो एम आप अत्यारे ब्लॉग अपने अपलोड करो है एटले के अनलिस्टेड है अपने अपलोड थाय है पछी आप 7 वागे आप ब्लॉग नाखवाना ही एम आप मैं जे आगे टाइटल नाख्यु है एम हूँ बोलो खुद हूँ बोलो हूँ एम आप आगळ बोल्या ही के एटले के 15मो दिवस है सॉरी 15मो दिवस एटले आ 16मो दिवस हतो एटले ब्लॉग आप थोड़ा भूल थी गई है आगे लखवानो 16मो अने लखी जो 15 तो जे आप आज जी ब्लॉग बनायो है एटले आ है 17मो दिवस तो भूल थी माफ कर दीजो मने सॉरी। हाँ चैनल तो आप कंटिन्यू रहवानो है। हे मित्रों तुम तो तमे फूल मजा मारी तो 30 डेज चैलेंज आ है 16मो दिवस तो दवा छाटी ही जेला नड़ी है पंप है जो लो ट्रेक्टर है जो छाटे है आप दवा अँ लींबू है पानी केन पेरू है टाको है अँ के मगफड़ी वावी है जो लो अँ दवा छाटे है तो हवे तमने मलो फरी थईने ताले मित्रों जो आप अत्यारे जो लो बीजी वाड़ी है ज्यां आप लाइटों गोठायु है फरती गयो तमने नहीं देखातुं होय तो वाड़ी है ने जो लो आ कहूँ लाइटों नहीं आने के मैं टमटमिया कही तो हवे तमने आ चालू करीने बताऊँ मोबाइल अँ क्या पर राखी दीशुं ने आ तमने देखाड़ीश करी तो हवे तमने मळुं एटले आ तमने देखाड़ूं। तो मित्रों जो लो आ टमटमिया है ने टमटमिया कही जो આવી રીતે આપણે ફરતી કોર લાઈટ તો મિત્રો તમે જોઈ લીધું આપણે આવી રીતે આપણે ફરતી કોર ગોઠવ્યા છે ફરતી કોર એટલે કે ગુણો આવે એટલે તો હવે તમને મળું છું તો ઘરે જઈને ઘડીક આપણે આંટો મારશું ફરતી કોઈ જો આપણે મગફળી કેવી થઈ જાય છે જામી જઈ એ હરખી રીતની જોઈ લો જામી જઈને હવે તમને મળું ફરતી કોઈ આંટો મારીને। तो मित्र जो आप आटो मारने पीछे घरे आप बैठा था तो पप्पा फोन आयो तो ताकि अँ घड़ी री जाए आप लाइट चालू कर नाखिए तो तमने मारा वहाँ देखाती जैसे एम थी लाइट तो जो लो आप चालू कर नाखी है लाइटू हाँ भाई बैटरी पड़ी थी तमने नहीं देखाय भाई जो आप चालू कर नाखी थी तो हमें तमने आ मैं लाइट चालू करी है बंद कर तमने देखाड़ू तो जो लो मित्रों लाइट तमने देखाती है लो આવી રીતે ફરતી કોર થાય છે અને મિત્રો એવી રીતે આપણે ફરતી કોર થાય છે આપણે ઠેઠ ફરતી કોર થાય છે આપણે જ્યાં જ્યાં લાઇટો લગાડીએ ફરતી કોર આપણે થાય છે। તો હવે એટલે જે આપણે જે લાઇટો ચાલુ કરી નાખી છે આપણે એમથી તો હવે એટલે જે આપણે ઘરે અને મિત્રો બસ આજના બ્લોગમાં આટલું। જો તમને બ્લોગ સારો લાગ્યો હોય લાઇક કરી નાખજો શેર કરી નાખજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। મળશે એક નવા બ્લોગની અંદર ત્યાં લગી બધા મિત્રોને બાય બાય જય રામ જય ખોડિયાર।